I hope you all are doing good. Okay, welcome back to a new day. How are you all? Are you all good? Give me a thumbs up through Zoom. Send me a thumbs up through Zoom. And open your cameras. Hassan, how are you? Are you feeling good today? Okay. Okay. Okay, so everyone is good, alhamdulillah, mashallah. Okay, so as you all know that we do the recitation before starting our class. So today I want Maham Asif. Where is Maham? Ji Maham. Today you will be doing the recitation today. Maham, unmute yourself. Girls, all the girls, cover your head. And open your cameras, all of you. Ehsan, Alishba, Mahir, Fariha, Ayan Abbas. आप जाएं बस। नाजरा हो रहा है? नहीं, नाजरा नहीं हो रही है। इस दुआ पढ़ाती है हमने। Okay, Maham, recite any surah. कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। तो इट्स ओके, सब बच्चों ने फर्स्ट टाइम किया था बेटे, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Jazakallah Maham, thank you so much. Okay, so let's not waste much time and move towards our studies. Okay, so in the previous classes, what were we learning? Who's going to tell us? क्या पढ़ा था previous classes में? Previous maths numeracy class में क्या पढ़ा था? Can anyone tell me? Okay, G Mahin is raising her hand. Yes, Mahin, unmute yourself. Teacher, we learned division and multiplication. No, who said that? Sorry, kilogram. No. बेटे इन द प्रीवियस क्लासेस मतलब कल और परसों की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Okay, let's give a chance to Maham. Maham बताइए क्या पढ़ा था कल और परसों की क्लास में बेटे? मिस मेरा नेट नहीं चल रहा था, आपने कोई सॉफ्टवेयर पे होमवर्क भेजा था? बेटे मैंने पूरे कोई दिन लाइट नहीं भेजा था, मैंने सिर्फ वीडियोस अपलोड करी थी, आप वहां से देख लेना. ओके, हमें अयान अशरफ बताइए क्या पढ़ा था हमने? अयान अशरफ आपकी आवाज नहीं आ रही है. Multiplication. No, we did not learn multiplication. Ji Hiba, what did we learn? What were the two operations that we learned? बेटे हमने लास्ट के 2 डेज में कौन सी 2 ऑपरेशंस को पढ़ा था? 2 ऑपरेशन. 2 हमने कुछ पढ़े थी, 2 चीजें 3 अपनी 3 लास्ट 3 डेज में. जी ज़ैनब बताइए आप. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Excellent ज़ैनब, very good. हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. It is so simple to tell. Addition and subtraction. That was all we learned in the previous 3 days. We learned actually what is addition, what is subtraction. Then we learned about that what are the properties of addition, what are the properties of subtraction and addition both, right? Right? And if you have any confusion, you can go to the university and you can watch the recorded lectures over there. There, I have uploaded the previous lectures on university. You can easily go and find out the lectures over there if you have missed any. Okay, so who is this Farwa Zehra 5 Green? Kindly open your camera.
Ehsan, Farwa, and Mahir. I want you people to open the cameras. And this Farwa, Zahra, I want you to come with your name because you are not here with your name. Okay, so let's move forward, and I have a video to show it to you people. In that video, there are some different ways to do the addition, and there are some different ways to do the subtraction as well. ठीक है, addition को करने के कुछ different ways और subtraction को करने के कुछ different ways. ठीक है, so do you all want to watch that video? Give me a thumbs up through Zoom. बेटे फरवा, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, आप प्लीज कैमरा खोल लो या फिर आप अपना नेम प्रॉपर जो नेम है वो उसके साथ आइए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. And Mahir Asif, kindly open your camera as well. Ehsan Siddiqui, you also. Those who will be closing their cameras will be going out of the class. Okay, so I'm removing Farwa. Farwa and Mahir, Ehsan Siddiqui, I want you to open the cameras. बेटे अगर मैं आपको रिमूव कर दूंगी तो आप दोबारा क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे. Mahir Asif, Ehsan Siddiqui, open your cameras. Bete Farwa, I can't see you. Farwa, unmute your mic. Farwa, अपना mic unmute करो बेटे. Farwa, unmute your mic. Bete, everyone is waiting and it's going so long. बेटे मेरी आवाज सबको आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? बेटे सबको आ रही है? आई डोंट नो व्हाई आपको क्यों नहीं आ रही है. आप अपने एयरफोन्स निकालो या डू समथिंग. माहीन, एहसन एंड महीर, दिस इज द लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. Okay, so here is my screen and okay. Okay, can you all hear? Beta, stop doing these things. बेटे जरूरी है कि अगर मैं भूल जाऊं कोई चीज करना तो you people will start doing such things. Is it important? Okay, so today we will be learning about. Can you all hear the video? आपको वीडियो की आवाज आ रही है? So give me a thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom दे मुझे. If you can hear the video, the sound of the video. Send me a thumbs up through Zoom. किसी को भी नहीं आवाज आ रही? Okay, I'll be explaining it.
हिबा आपको वीडियो की आवाज आ रही है? अच्छा, ओके. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ एडिशन. ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट वेज ऑफ एडिशन. सो the first way or to do the addition, that is use of fingers to add. मतलब use of your fingers to do the addition. ठीक है, अपनी फिंगर्स को यूज करते हुए हमें एडिशन सीखनी है. ओके, सो लुक. Okay, the girl here standing is Amy. Her name is Amy. The girl standing in the picture, her name is Amy. She is looking at a window where a signal is over there, and some of the cars are coming over here. Okay. Then what happens is she saw that there are 3 buses. Okay, she can see 3 buses. Now there are only 3 over there, but after some minute, what happens is, okay, so she opened 3 fingers. Okay, in one hand she opened 3 fingers. Okay, and then 2 more buses came. Okay, they stopped at the same signal. Now in the second hand she opened 2 more fingers. Now she will start counting the fingers. Okay, now just look at the video. She'll be starting the counting of the fingers. Now she'll be counting the fingers. 1, 2, 3, 4, 5. How many total buses are there? There are total 5 buses. So she did the addition by taking the help from her fingers. Is it clear? You can do the addition by taking the help from your fingers. Is it clear? Give me a thumbs up through Zoom. Send me a thumbs up through Zoom. I want all of you to send me a thumbs up through Zoom. Okay, very good. Okay. Okay, so I hope you understood the first the way by which you can, do the addition. Okay, now she is giving you another example. Okay, so the second type is use of counters to add. Use of counters. Counters basically you can say some objects, जैसे this pen. ठीक है, these pen can be used as the counters. ठीक है, तो in the video they are using marbles. ठीक है, वो छोटे छोटे marbles use करके आपको explain करेंगे. ठीक है, by the help of those counters आप addition कर सकते हो. ठीक है, मतलब आप, that is also a way to do the addition. Is it clear? Okay, so here is Amy and her friends. They all are playing with marbles. Okay, now what happens is the boy is having 3 marbles and the girl over here is also having 3 marbles. Okay, now what is going to do is they are going to add these marbles. Okay, वो marbles को अभी देखेंगे and then they'll be adding up that कितने marbles हो गए total. See, the boy was having 3 marbles and he kept it on the ground. Now, the girl Amy is also having 3 marbles, so उसने भी उनको ground पे रख दिए. Now count them all together. अब उनको all together count करें. जरा count करें and raise your hand. So I'll be unmuting you and finding out the answer of this question. जी Malahim, unmute करें. Yes Malahim, how many marbles are there? 6. Excellent. So there are 6 marbles. Amy and her friends are having 6 marbles, right? See,
see now, they'll be solving it on the screen as well. Okay, now, so the next use of the next different way is use of number line to add. अब use of number line to add, ठीक है? अब number line के through addition करना. It is a very simple way and a very easy way. Okay, so the girl Amy is sitting over here, and here is the classroom, and this is the classroom of Amy, the girl Amy. Okay. Okay, so by using the number line, can you see the number line on the board? आप सबको number line दिख रही है board पे? ठीक है? So the numbers are starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here are the numbers, okay? Now see that what are going to tell you that how to use the number line, okay? Okay, so we have 3 plus 2 is equal to, okay, अब हमें find out करना है that 3 plus 2, what is the answer? ठीक है? Now what we do in the number, जो हमारे पास first addend होता है, we circle that first addend and the first is 3. ठीक है? अब हम क्या करेंगे, प्लस के बाद हमारे पास है सेकेंड एडेंड, राइट? ये हमारा क्या है, दिस इज द सेकेंड एडेंड. हमने पढ़ा था कि जब हम एडिशन करते हैं तो हम ऊपर नंबर जो होता है उसको फर्स्ट एडेंड कहते हैं, और जो सेकेंड नंबर होता है उसको सेकेंड एडेंड कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, सम. ठीक है? इज इट क्लियर? तो जो फर्स्ट एडेंड है यहाँ पे वो है 3, तो हमने नंबर लाइन में उसको 3 को सर्कल कर दिया, एंड द सेकेंड एडेंड ओवर हियर इज 2. तो हम यहाँ 2 को सर्कल नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू इज वी विल जंप फ्रॉम 3 to 4 and 5. हम यहाँ से 2 जंप्स लेंगे. ठीक है? क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स जंप करेंगे. तो जब हमने 3 से 1 टाइम जंप किया तो 4 आया, और जब हमने 4 से 5 जंप किया सेकेंड टाइम में तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 5. तो 3 plus 2 is equals to 5. इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को कि नंबर लाइन कैसे यूज करते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गिव मी अ थम्स अप थ्रू जूम. सेंड मी अ थम्स अप थ्रू जूम. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, परेशान नहीं हो. ओके, we will be keeping a question answer session too. Okay, so let's move forward. 5. Okay, the answer becomes 5 because we jumped from 3 to 2. 2 is equals to 5. Is it clear? जी अयान अशरफ अनम्यूट करें. You have a question? बोलो बेटे. No, miss. Okay, you raise your hand. Okay. 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 Okay, so the fourth way of addition, to do a addition is count mentally. जो fourth way है वो है count mentally. सही है? Now let's see. Okay. Okay, so we'll be taking an example. Just give me a second. Okay, now so they gave us an example 3. Okay.
3 plus 2. Count mentally. ठीक है. Now in this way, what you are supposed to do is the first addend. The first addend is 3. ठीक है. The first addend जो है वो 3 है. What we do is we keep that first added in our mind. मैंने 3 अपने mind में रखा और 2 मैंने अपने fingers पे open किया. ठीक है. 3, 4, 5. What is the answer now? What is the answer now? What is the answer now? Chat box में लिख के भेजें जरा मुझे. बेटे फरीहा, पहले आप इस क्लास में तो कंसंट्रेट कर लो ना. ओके. हसानुल हक ज़ैनब एक्सीलेंट. मलाहिम वेरी गुड. अयान अशरफ एक्सीलेंट. अब्दुल बारी वेरी नाइस. Okay, very good. So we kept 3 in our mind and 2 on our fingers. 3, 4 and 5. Okay, let's suppose we have 8 plus 1. Give me the answer in the chat box. Give me the answer in the chat box and I want to see all of you doing it on in the screen. मुझे देखना है कि कैसे करना है. 8 in my mind, 1 on my finger. Do it on the screen. Do it on the screen. See, I'm also doing it on the screen. You are supposed to solve 8 plus 1. 8 in my mind, 1 on my finger. 8. And then this is... Okay, Amna Tabir, Zainab, Ayan Ashraf, Abraham has given us the correct answer. Very good. Can any one of you explain? Can any one of you explain this? Okay. So today we learned that the different ways of doing addition. Tomorrow we will be learning the different ways to do the subtraction. ठीक है. जैसे ही जब हमने प्रॉपर्टीज एडिशन सब्ट्रैक्शन की पढ़ी थी तो ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होंगे. राइट? एम आई राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so can any one of you give me a small review of these 4 types? सब एक एक टाइप जरा मुझे बताएंगे. सब एक एक वे बताएंगे मुझे. जी माहीन, मुझे कोई सा भी एक वे बताइए. माहीन, explain any one way. कौन सा वे आपने सीखा और आपको अच्छा लगा वो वाला वे to do the addition? टीचर मुझे ना वो हैंड वाला अच्छा लगा कि एडिशन जो हमने की थी, एडिशन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. ओके, तो उसमें कैसे एडिशन करते हैं हम माहीन? टीचर अब 8 plus 1. ठीक है. ओके. 8 plus 1. Okay, then 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 in my mind and 8 finger. Answer is 9. बेटे जो आप वे बता रहे हो ना वो वे डिफरेंट है और जो आप कर रहे हो वो डिफरेंट है. जो आप कर रहे हो वो फिंगर एडिशन है और जो आप माइंड में सोच रहे हो ना वो काउंट मेंटली कर रहे हो. ठीक है. तो ये आप 2 डिफरेंट वेज को एक साथ कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो. ये गलत है. ठीक है. आप या तो सिर्फ वाला कर सकते हैं या आप एट अ टाइम एक काउंट मेंटली कर सकते हैं. इज इट क्लियर? They both have different, you know. ये finger addition is you easy. Like the finger addition. Okay, तो finger addition में वो आपको क्या example दे रहे थे कि there were 3 buses and 2 more buses came on the same signal, right? How many total buses were there on the signal? 5. Okay, very good. So you like the finger addition way, right? Yes. Okay. Okay, हिबा. Yes, हिबा. कौन सा वे पसंद आया आपको एडिशन का? Which way? Miss mind one. Sorry? Mentally. The number line one? Miss the 4th one. The count mentally. One. The count mentally yes, one. Okay, so can you explain it to me? Yes, miss. Okay, so give me an example. Give us an example. Miss, like 8 plus 1. Okay. We put 8 in our mind. Okay. And 1 and you open 1 finger. Excellent. Then
We will count after 8. Excellent. 8. Very So good. 9. The answer will become 9. Very good. Very good, Hiba. Very good. Okay. Yes, Abdul Bari. Abdul Bari, unmute yourself. And Miss, count mentally. you also like the count mentally way. Okay. So can you give us an example? मिस 3 plus 2, 3 को हमने माइंड में रखा और 2 को काउंट किया तो आंसर 5 आएगा. Okay, so you will count after 3, right? 3 को क्योंकि आप अपने माइंड में रख रहे हैं and you are opening 2 fingers. So 3, 4, 5. Is it clear? Yes. Okay, excellent, Abdul Bari. Very good. Okay, so yes, Hassan, unmute yourself and tell us that which way did you like to add? Miss, I like number line. Okay, you like the number line way. Okay, that's my favorite too because it's very interesting. So can you explain it to us? Miss, in number line, the first addend is circle and we jump on second addend. Okay, you take the jump, you do the jump. जितना number होता है second addend का, you jump that times, right? Miss, like 4 plus 3. Okay, so you'll circle 4 and you'll jump 4. times, right? Yes. Okay, so what will be the answer then? 7. Excellent, very good, Hassan. Okay, yes, Abraham. Abraham, बताइए which way of addition did you like? Teacher, line 1. Teacher, count line 1. Okay, you like the counters to add. Okay, so can you give us an example, Abraham? Teacher, counter 9. Bete, it's not counter line, it's only counters, use of counters to add. The second is way of addition is use counters. उसमें कोई line use नहीं करते हैं. आप जो कह रहे हो ना, वो number line counter अलग है. तो do you like the number line way or the counter way? Abraham, I can't hear you, beta. ओके, तो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है. जी बेटे बोलो. I can't. टीचर. जी बेटा बोलो. टीचर मुझे जो है ना सबसे ज्यादा अच्छा टीचर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा काउंट मेंटल लगा था. Okay, you like count mentally. Okay, so as your class is about to end, it's 3-1. So Miss Tahira must be waiting for you all. Okay, so we'll be continuing tomorrow, and I will be asking each and every one of those who haven't got the chance today, like Zainab, Fatma, Ayan Abbas, Amna Tabish, Mahir, Fariha, Malahim, Talbiya, Ayan Ashraf. ठीक है, अलिशबा. जिन बच्चों को चांस नहीं मिला है उन सबको चांस कल मिलेगा. ओके, तो आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा टाइप पसंद है और आप उसकी एग्जांपल्स लिख लीजिए. मैं आपसे कल उसके बारे में पूछूंगी एंड यू विल बी गिविंग अस एन एग्जांपल. ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन को डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? I hope you all learned something new today as well as you all do every day. Okay, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.